Good afternoon, everyone. I hope you guys are doing great. I guess our picture is already on time. He have joined early before us. And market आप देख ही रहे हो, flattish to positive opening के बाद एक हमें थोड़ा सा fall देखने मिला है nearly 160 points in Nifty. And जो भी market में fall देखने मिला है, right? उसके बारे में हम बात करेंगे. Arpit sir is here with us, and we will definitely cover everything. And कोई भी stocks का around में अगर कुछ रहेगा, the BTS treated or delivery idea, we will definitely share the same with you guys. And उसके अलावा अगर कोई strategy दिखता है हमें in the options, we will share the same with you guys. So please be with us till the end. So Arpit sir, over to you if you are good to go. Or, Yes, very good, everyone, Avinash, and to all our viewers. Just want to check my voice is audible and the screen is visible. Yes. Okay, perfect. So very good afternoon, guys. Today is Valentine's Day, and as the Valentine's color is red, we are seeing a red of C across the market. Whether it's mid cap, small cap, large cap, small cap, Nifty, Bank Nifty, and we have seen thorough selling across all the segments. So the flow for the session would be starting with Nifty, Bank Nifty outlook, followed by the broader market outlook, then which stock opportunities we are there for the short side or on the long side, and if the trading strategies, if we get any opportunity. So far, very good afternoon once again. Today is Friday, weekly close, 14th Feb. Starting with Nifty, as we have been quite bearish on the indices from last couple of weeks, and a day before yesterday also we have shared a view कि Nifty एक broader range में रहेगा 23,200 upper band में, नीचे 22,800. तो ये रेंज ही प्ले आउट हो रही थी. कल एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा पुल बैक आया निफ्टी में, बट इट फेल्ड टू होल्ड एट हाई लेवल, एंड अगेन वी हैव सीन अ सेलिंग प्रेशर राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे. So 23,200 is a major supply zone for Nifty. On the immediate basis, 22,800 is a major support zone. And I'll just look at the few intermittent chart, good recovery I've seen from the lower levels from 22,800 levels, but still the trend is in pain. So if I just look at the weekly chart, so let me have a look at the weekly chart because today will be weekly close. Let me revisit the weekly chart of Nifty. So this week we have seen a strong bearish candle after some recovery in the last couple of weeks. Strong bearish candle, and level wise जब तक ये 23,200 मेजर लेवल है, जब तक उसको सरपास नहीं करे, उसके बेसिस क्लोजिंग नहीं आता है, तब तक बाइस ऊपर नेगेटिव. एट द सेम टाइम अगर हम डेली चार्ट देखें तो बार-बार 22,800 से उसने रीटेस्ट किया है. आज भी उसने उसके पास ही सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा बाउंस बैक आया है, बट स्टिल द ट्रेंड इज इन प्रेशर. निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो इट्स 200 डेमो 50 डेमो. तो 23,200 मेजर हर्डल जोन है. इमीडिएट 23,050. जब तक 23,050 के नीचे रहेगा निफ्टी में सेलिंग प्रेशर रहेगा, एंड वुड एडवाइस कि बेटर है आप बेयरपुट स्प्रेड्स या हेजिंग के थ्रू ही निफ्टी को प्ले करें. तो टॉक अबाउट बैंक निफ्टी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप अलग है. और बिगर ट्रेंड पेन में है, बट जो इंटेंसिटी है वो रिलेटिवली थोड़ी कम है. तो वीकली स्केल पे लोअर प्राइस बना रहा है, डेली स्केल पे भी रेंज में फंसा हुआ है. आज सुबह खुला फ्लैटिश, थोड़ा सा पॉजिटिव, एंड देन वी हैव सीन सेलिंग फ्रॉम 49,500 लेवल. सो बैंक निफ्टी की ब्रॉडर रेंज है 48,500 से लेके ऊपर 50,000. इमीडिएट रेंज है 48,750 से लेके 49,500 लेवल. सो इसमें भी हमारा बाइस नेगेटिव है. जब तक बैंक निफ्टी 49,750 के नीचे क्लोजिंग रहेगी, बाइस विल बी नेगेटिव फॉर 48,500 48,000 लेवल्स. राइट नाउ बैंक निफ्टी इज अराउंड 49,000 लेवल. हमने 150 से 200 पॉइंट की रिकवरी देखी है पिछले कुछ मिनटों में, बट ओवरऑल बाइस नेगेटिव है बैंक निफ्टी में भी. रिलेटिवली जो इंटेंसिटी निफ्टी में है उस इंटेंसिटी के हिसाब से बैंक निफ्टी में उतनी इंटेंसिटी नहीं है, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक अगर हम देखें तो रिलेटिवली फ्लैटिश टू पॉजिटिव है. एचडीएफसी बैंक में थोड़ी वीकनेस देखी है, बट ओवरऑल बैंकिंग का स्पेस देखा जाए तो रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया. बैंक निफ्टी में लेवल है 49,750 मेजर, immediate basis में 49,500 is the immediate hurdle zone for Bank Nifty. And Nifty में if we see 23,050 is the immediate hurdle zone, and then major hurdle is the 23,200 levels. So intraday charts where in both the indices we have seen some recovery, but still the bigger trend is in pain. Now if I talk about the broader market, the real pain has been the broader market, and if we see across mid cap and small cap, mid cap
index, if we see the weekly, it is almost down by 8%. That is one of the biggest weekly losses that we have seen in recent past. Along with that, if you see the Nifty small cap, so let me have a look at Nifty small cap index. इसमें भी small caps अगर हम 100 देखें तो one of the highest weekly fall we have seen in terms of magnitude wise, almost more than 9 to 10% we have seen corrective move of in the broader market index, and this is generally the trend of the market has been. थोड़ा सा pullback आता है and then we again see selling pressure. थोड़ा सा pullback आता है and again we start seeing the downtrend setup in the stocks and in the indices. Now coming on to the sector wise, apart from Nifty financial space, if we see broadly all the major sectors are in pain. And अगर हम financial space के बारे में बात करें तो relatively हमने last week couple of दिन के पहले भी discuss किया था. Bajaj Finance, Kotak, जो relatively outperforming stocks थे, अभी भी relatively outperform कर रहे हैं. But if you see, the real pain over here is in reality is in continuously downtrend. If we see auto, so auto is also under pain. Whether we see energy, so obviously after NSE 500 अगर हम breadth देखें, so almost 500 stocks में 480 stocks are negative. That clearly indicates कि bears ने एक heavy grip बना के रखी है, and that we can clearly see in the price action of all the major stocks also. Continuously lower structures is intact. So stock wise में अगर हम देखें, so we are suggesting कि large cap selective bets में ही रहे. That is very much important. And in spite of so many good news that we have in the last couple of weeks, whether it's the inflation numbers, the RBI policies, or some reduction in trade tariffs also, but there is no respite in the market. So levels के बारे में हम बात करें तो Nifty 50 जो एक major है, जो हमारा headline index है, 23,200 major resistance zone है, immediate base में 23,050. Immediate support जो आ रहा है 22,750, 22,800 एक मेजर सपोर्ट जोन है. उसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हमें फ्रेश वीकनेस दिख सकती है 22,500, 22,400. अभी भी सेल ऑन बाउंस का स्टैंड ही है. बाउंसेस आएंगे, डेफिनेटली देयर वुड बी स्टीप बाउंसेस आल्सो, बट यू हैव टू प्ले इट वेल अकॉर्डिंगली एज पर द मार्केट सेटअप्स. स्टॉक वाइज में बात करें तो we have been quite positive on selective large cap counters, and that is among the telecom space is Bharti Airtel. तो अगर हम भारतीय एयरटेल का चार्ट सेटअप भी देखें रिजल्ट के बाद we have seen very good momentum. Slowly steadily it is moving higher. Market की weakness के बाद भी it has given a range breakout above 1680 levels, and slowly steadily the stock is trading there live by trading. So one of our CDI calls from a medium term perspective is would be Bharti Airtel. तो आप बाय कर सकते हैं 1700 से लेके 1710 की रेंज में. 1660 का स्टॉप प्राइस रख के ऊपर 1750 और फिर 1800 के लिए भारतीय एयरटेल का बाय कर सकते हैं. So one of the ideas that we have shared, Avinash, you can mention the levels for the CDI calls, that is Bharti Airtel. Apart from that, the second counter, as we have been relatively better on the banking space, so we have seen good recovery in Bank Nifty and Nifty in the last couple of minutes. तो उसी में हमारा रहेगा banking space में ICICI Bank. तो अगर आप large cap banks देखें तो large cap banks relatively better के outperform किए, and also as per the relative strength study, whenever in market whichever counter falls less in the market turmoil, that is the counter that is likely to be a next outperformer. तो ICICI Bank भी एक रेंज में है, जिसमें 1240 से लेकर ऊपर 1300 के रेंज है. So ICICI Bank also looks good from positional perspective. Having said that, bigger market trend is in pain. So आपके जो bets है that will be from more of a investment perspective rather than a trading perspective. So ICICI Bank 1257 चल रहा है, आप 1250 से 1255 की रेंज में बाय करें. 1220 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 1310 के टारगेट के. तो ये हुआ ICICI Bank एंड बैंक निफ्टी भारती के बारे में. नाउ लेट अस लुक एट द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी. So Bank Nifty, you see the setup wise, yes, we have seen a recovery of almost 200-250 points from intraday lows, but generally such lows or such recovery is not able to sustain. So today's closing would be very much important. Bank Nifty 49,500, 49,750 के नीचे जब तक रहेगा, bias would be negative. Relatively, ये थोड़ा सा outperform किया as compared to Nifty, because Nifty is at lows 22,800. That was couple of days back also. But Bank Nifty एक relatively outperform किया है, जो उसने 10 दिन पहले 40,000 का around low मारा था, उसको वापस रिटेस्ट नहीं किया. तो बैंकिंग एक जो है रेंज में है, बट अपसाइड कैप है. स्टॉक वाइज अगर बात करें, सो सिलेक्टिव लार्ज कैप्स ही खाली होल्ड कर रहे हैं, बाकी पूरा एडवांस रेशियो इज ऑलमोस्ट 90-95% इन फेवर्स ऑफ बेयर.
So that is the setup for this thing. Now looking at the option trade setup, because overnight है weekend रहेगा, so naked options की हम suggest avoid करेंगे, but yeah, strategy definitely we can suggest. So we'll suggest the strategy in Nifty or Bank Nifty as per the market setup in couple of minutes to carry. We can carry for the next week. That will suggest as per the market's advice. In the meantime, what we can do, Avinash, if we get any opportunities for the BTST or SCBT, we'll update on that. Also, any queries we have for our stocks, definitely we would love to share our views on that, and better to protect if the position is in pain. So let us take few stock queries, and then we'll talk about the strategies of the BTST and SCBT trades if we get any opportunity. Avinash, you are on mute. Oh, I'm so sorry. So Yeah. Ankit, could you please repeat once again, the levels for Bharti Airtel, the stop loss and the target? Yeah, so Bharti Airtel relatively, if we see, in spite of market fall, this counter has been quite outperformer, and monthly weekly setup is very strong. Weekly पे एक range breakout दिया है 1690 1700 के ऊपर. So आप 1700 से लेके 1710 के आप भारतीय एयरटेल में बाय कर सकते हैं. 1660 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर 1750 और 1780 के लिए भारतीय एयरटेल वी कैन बाय. So guys, we have initiated two delivery ideas. One is on Bharti Airtel and another is on ICICI Bank. The stop loss and the targets have been mentioned in the chat box as well, and we have pinned it. So guys, don't forget to initiate the trade with the stop loss or whatever we have suggested to you. So we'll move ahead with the stock queries. Uh, so DCW bought at 84. DC W. DCW Right. at 83. 84. 84. So if we see the setup wise on the daily scale, it will give a breakdown. However, if we see setup wise, एक major support है around 73, 74 का आज इंटरडे स्विंग मारा 72 का. Setup wise अभी भी पेन नहीं है. कल हमारा ये आइडिया था BTST का, but because of the market weakness, we have seen selling across all the broader and mid cap stocks. Level wise 72 का major support है. Upper band में 80, 82 का hurdle है. So जब तक 72 को ऊपर hold करता है, तब तक you can hold it. Week below 72 closing, अगर 72 के नीचे closing आती है, तो better to exit this counter. MGL 1200 put bought at 23. Which counter? MGL 1200 put bought at 23. 1200 put and bought at 23 rupees. So if you see the setup wise on the weekly scale also it's in downtrend, daily scale पे भी breakdown दिया है. Overall daily scale पे एक range में 1200 से लेके 1280 की range में. So I think ये जो put आपने buy किया, you can hold it जब तक MGL 1275 के नीचे रहता है closing, तब तक आप MGL को hold कर सकते हैं. So continue to hold this stock with stop loss of 1275 spot levels, because put आपने buy किया तो definitely movement रहेगा. अभी 15 दिन है एक्सपायरी को, तो जब तक 1275 के नीचे रहता है क्लोजिंग बेसिस पे, you can hold this put with stop loss of 1275. So a very interesting question from Vishal ji, and I guess majority of the people will have the same question in their head. सर जी मार्केट इतना क्यों गिर रहा है, पोर्टफोलियो एकदम से रेड हुआ है, अच्छे स्टॉक्स में 30% डाउन है, सर क्या करें, एवरेज करें? Yes. So definitely such times are tough for everyone, and after a long time we have seen such a tough time for all our investors and traders. So I just like to touch upon few of the key things in such market. First and foremost, it's very important कि हमें market का setup समझना है. And when we've seen in last 3 to 4 months, market has been continuously downtrend, where the market breadth was deteriorating like anything. So first and foremost, the reason is because of continuous FI sellings that we have seen in last couple of months. That is one of the major key trigger. Second is the earning cycle that has been downgraded a lot of times across all the companies. Along with that, trade tariffs, and generally, if we see the setup wise, technically wise, we have seen a good correction. But from a fundamental news wise also, if we see the consumption theme was playing out well, but has slowed down. So all factors together with the FI sellings and USD appreciating, along with that earnings downgrade,
and the consumption theme has been slowed down. All these factors have really triggered down the overall the setup of the Indian equity market. But having said that, if you see every person, definitely portfolio would be down by 15 to 20, 30 to 35%. But such times are not to panic. Especially, yes, trading has to be very much with risk management. But जब आपके इन्वेस्टमेंट है और आपको अगर अच्छी कंपनी आपको ऊपर के भाव से नीचे में मिल रही है, so definitely you should add quality companies that have good long term financials and better holding. So long term investing के लिए it's a good time to add. But from a trading wise, better to wait because अगर आप मार्केट ब्रेक देखा जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी कार्नेज काफी है. Nifty Bank Nifty relatively better रहे. So our advice would be that going forward for next 1 to 2 months, definitely this जो ये volatility है slowly gradually will settle down. But at such times, better to keep upon your SIPs, keep on adding your funds at lower levels with the investment perspective, not from a trading perspective. And they have seen such bear cycles also. COVID crash हमने देखा था, that was very quick, but that regained very sharply. After almost 3.5 years, we have seen this brutal cycle. And especially we have seen pain in mid cap and small cap. Also, जो stocks है जो weak है financial wise, better to exit the stocks from the mid cap and small cap space because आपको अगर जो weak counters जो आप hold करोगे तो उसमें कभी पैसा नहीं बनने वाला. But buy fundamental strong companies that will be definitely help you to build a better portfolio. Also, good trending counters and large caps would be a preferred pick. So आज भी हमने जो दो pick दिया वो large cap pack में से ही है, भारतीय एयरटेल एंड ICICI बैंक. बिकॉज जब भी आपका जो मार्केट का सेटअप बदलेगा, मार्केट में जनरली लार्ज कैप प्रेफर्ड ओवर मिड कैप स्मॉल कैप whenever there is volatility. So these are the couple of reasons. Having said that, you have to be patient and you have to be calm down because such markets where you generally people take his decisions that goes against them. But trading wise, please follow stop losses, please manage your risk. That would be a real advice. And as you're seeing some recovery in the broader market and in index, so we have got one BTST call, that is NMDC. So definitely metal pack is relatively been better. So setup wise अगर हम देखें, so overall NMDC का chart wise देखें, so अभी chart wise में obviously majority counter will be weak, but relatively metal pack has been resilient in such market volatility also. So NMDC अगर हम देखें तो अभी 62 60 के अराउंड चल रहा है. That is will be our first BTST idea. 59 का stop loss रख के ऊपर 67 के टारगेट के लिए NMDC would be one of our BTST idea. Concluding with the current market turmoil, guys, be patient. There is no need to worry. Yes, market has been tough. So trading and leverage positions आपको manage करना पड़ेगा. But जो investment है, definitely can keep topping up your SIPs and investments slowly, gradually. Little bit of correction might be there more in the offering, but so far looking at the setup guys, good 60-70% pain we have already seen. So that's all from the portfolio and the medium term outlook wise. एक BTST trade हमने already share किया है. Avinash, we can move back to stock queries and अगर कोई trading opportunity strategy wise में index हमें लगेगी, so we'll update on that. Sir, can we buy TVS put option 2400? TVS put option. Let me have a look at the chart. Which strike price? 2400 put. So right now TVS quoting on 2410. So auto index overall एक downtrend में ही है. सेटअप वाइज अगर हम देखें तो वीकली स्केल में थोड़ा सा पुल बैक देखें, बट डेली स्केल तो वापस लोअर है, स्ट्रक्चर बना रहा है. सो आप टीवीएस मोटर बाय कर सकते हैं, पुट 2400 का पुट बाय कर सकते हैं, बट आप उसको ध्यान रखिए स्टॉप लॉस आपको रखना होगा स्पॉट लेवल्स के सबसे 2460 का. एंड ये ध्यान रखिए, ट्राई करिए जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्राई टू डू इट इंट्राडे बिकॉज़ द नेक्स्ट डे वी रियली डोंट नो व्हाट विल हैपन अप एज पर द मार्केट सेटअप वाइज. तो आप पुट बाय कर सकते हैं. 2460 का स्पॉट लेवल्स में आप स्टॉप लॉस रखिए टीवीएस मोटर का. पुट का लेवल जो अकॉर्डिंगली आपको बनेंगे वो आप ले कर सकते हैं. What is the view on DMart? DMart post ahead of budget is good momentum in this stock from almost 23,000 to 3,800 levels. However, post that we have again see some dip towards 3,100, 3,100 and वापस हमने एक recovery देखी है. So if I just open the weekly chart wise, so weekly wise अगर हम देखें DMart, so overall एक range में है. नीचे 3200 का सपोर्ट है, ऊपर 3850, 3900 का रेजिस्टेंस है. एक रेंज में प्ले आउट हो रहा है. FMCG स्टॉक्स रिलेटिवली स्टेबल है,
बट अभी भी एक रेंज में फंसे हुए हैं। तो नीचे में 3500 का एक मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 3800 का हर्डल है। अगर आपको बाय करना तो आप बाय कर सकते हैं 3550 का स्टॉप पे रख के, ऊपर 3850 3900 के लेवल से। BBL. BBL, Varun Beverages. Right. So Varun Beverages pulls the news of Reliance entering into the segment of the new beverage segment that has really dampened the sentiment for this counter. However, we see the setup wise weekly scale पे range breakdown दिया है 520 के नीचे, strong bearish candle बना है, डेली से भी लोअर्स लो लोस बना रहा है। पिछले ऑलमोस्ट एक साल से रेंज में था, बट वो रेंज को ब्रेकडाउन दिया है 500 के नीचे, 520 के नीचे। So I think some more pain is left in this counter towards 465 450 लेवल तक का। डेली और वीकली स्केल पे रेंज ब्रेकडाउन दिया है, so अपसाइड कैप है, 515 का हर्डल है, नीचे में 450 440 तक के मूव दिख सकते हैं। Lupin hold 2050 at 50. लुपिन, What is your view on Lupin? सो फार्मा का अगर हम देखें तो फार्मा जो नेचर है काफी इरेटिक रहा है पिछले कुछ दिनों में। एक अच्छा अपटिक हमने देखा था फार्मा इंडेक्स में कुछ दिनों में, वापस 2 दिन में वापस सेल ऑफ देखा है। सेटअप वाइज एक मेजर सपोर्ट जोन के पास में ट्रेड कर रहा है लुपिन 1950 2000 के अराउंड। डेली स्केल पे पिछले 3 दिन में हमने ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन देखा है फ्रॉम 2200 टू 2000 लेवल्स। सेटअप वाइज अभी भी एक ब्रॉडर रेंज में है। आपने ऊपर बाई किया हुआ है 2000 2200 200 2200 से बाइंग जोन, राइट? 2050 by 2050, ओके। सो अगर 2050 बाइंग प्राइस है तो आपके रेंज के पास में ही ट्रेड कर रहा है, सो बेटर टू होल्ड इट। 1950 आज का जो स्विंग लो है ऑलमोस्ट 1930 19 होने का है, तब तक इसके ऊपर है, बेटर टू होल्ड दिस काउंटर। 1920 1930 के नीचे क्लोजिंग आएगा तभी हमारी एग्जिट करने की सलाह रहेगी, तब तक एक ब्रॉडर रेंज में। ऑल्सो फार्मा इंडेक्स जनरली थोड़ा सा हाई बीटा रहता है, मेनली ड्यू टू इज एफडी अप्रूवल्स एंड न्यू सेंसिटिव। तो आपको उसके हिसाब से प्ले करना पड़ेगा। लेवल वाइज 1930 का एक मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 2050 2080। Inox Wind. Inox Wind being one of the small cap stocks, relatively this counter has been better. फॉल हमने करेक्शन सब में देखा है, बट सेटअप वाइज अगर मैं वीकली स्केल पे देखूं, आज जो हमने टर्मोइल देखा है मिड कैप स्मॉल कैप में, स्टिल द काउंटर हैज बीन होल्डिंग वेल। वीकली स्केल पे बुलिश एंगल्फिंग के बाद स्लोली स्टेडीली ट्रेडिंग अराउंड 165 170 लेवल्स। एक 160 का एक मेजर सपोर्ट बना लिया आइनॉक्स विंड ने। धीरे-धीरे हमें 178 182 तक का मूव दिख सकते हैं, बेटर टू होल्ड दिस स्टॉक। With this, I would like to add one more thing. Very selective pockets has been outperforming, guys, and try to keep opportunity in that counters, because जो market में कम गिरा है ये fall में, definitely that would be outperformance in the coming quarter and coming 6 months down the line. So keep a watch on the counters that are really relatively technically strong. Although we have seen broad-based selling, but definitely we'll get a few of the stocks that are technically very strong setup and the market leaders in their respective segment. SCL hold from 333 levels. Which stock? SCL. Can you spell it out? SCL. Chamanlal CTX. Okay, Chamanlal Setia. Setup wise, if you see on weekly scale, it is forming lower as low lows. जहाँ से range breakout आया था around 245 260 levels के around, the stock is back at its current that levels. Weekly scale वक्त कोई reversal नहीं है, better to wait. 245 250 is a major support zone. वहाँ पे stock ये आपके क्या करता है, we have to see it out. Immediate major support around 250 levels. Weekly scale पे अभी down trend में है, daily scale पे भी down trend में, better to wait. Don't try to average it out. थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी काउंटर में, तभी आप उसको टॉप अप कर सकते हैं विद की सपोर्ट ऑफ 245 लेवल्स। क्वेश्चन फ्रॉम ज्योति जी, महिंद्रा 3000 कॉल बाय किया है, लॉस बुक करे क्या? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज आपने क्या लेवल पे बाय किया? आई डोंट नो द लेवल, सो इफ पॉसिबल यू कैन मेंशन द लेवल, दैट वुड बी रियली हैंडी फॉर अस। हैविंग सेड दैट, ऑन द टेक्निकल सेटअप वाइज 2952 अभी चल रहा है एमएनएम स्पॉट वाइज, तो आपने 3000 का कॉल बाय किया है। सेटअप वाइज अगर एमएनएम देखे तो एक ऑटो काउंटर में रिलेटिवली बेटर रहा है, एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करता है 2700 से लेकर 3100 की रेंज में। पिछले 4 से 5 दिनों से लोअर राइज बना रहा है, लोअर लोस
ऑटो इंडेक्स में थोड़ा गेन में है. तो अगर आपने 3000 का कॉल बाय किया है, अगर M&M 2920 के नीचे क्लोजिंग आती है, so we would advise better to exit that call. Also, अगर मोमेंटम नहीं भी रहेगा, then also the option DK because of its option theta property, कॉल आपका reduce DK हो जाएगा. So 2920 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है M&M में, तो better to exit that call. Great. Sir, Godrej, sorry. Sir, Godfrey Phillips 20% circuit even in this market. Yes, so it was a post the outcome of result, and result is something that is not known within someone's. It's not within someone's control. Result अच्छा है जिसके वजह से stock is up, and such has been the nature of the market. जिसके result अच्छे आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं, market has its own way of discounting things and own way of showcasing the things. So setup wise, if I see the setup wise, let me have a look at the weekly chart because the daily chart will not really give you much signal on it. So if I see the weekly chart wise, a good recovery you have seen from almost 4,000 to 6,000 levels. Now it's back to its mere hurdle zone of 6,150. So 6,101 immediate hurdle zone है good for flip के लिए. उसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी हमें fresh momentum दिख सकता है towards 6,400, 6,500 levels. तब तक bias overall positive है, but अगर किसी ने पहले पोजीशन ली हुई है, so better to book the stock near current levels. So guys, we'll take two more stock queries, and before I move ahead with this two stock query, we have a very interesting question from Vishal ji once again. Harpreet sir, considering the जो market का भी फिलहाल status है, right, the condition we are into right now, अभी फिलहाल क्या करना चाहिए? इंट्राडे करना चाहिए या शॉर्ट सेलिंग करें apart from the investments? Yes. So two very good valid questions. First and foremost, short selling आपको करना चाहिए जो counters FNO में है. First and foremost, try to do it intraday as much as possible because that will definitely reduce your overnight risk. Because market का setup अगर आप देखोगे कभी दिन positive to negative, hardly mainly negative ही रहा है market पिछले कुछ दिनों से. But still, first advice would be you can go for short selling counters जो weak हैं, जो sectors weak है, उसमें से आपको counters pick करने होगा और उसमें आपको short selling करनी होगी. Second चीज for index, the best way to play such moves is through barefoot spreads. हमारा knowledge session series भी हुई थी जनवरी में, and I think that was a perfect time to do that series because that has been very much useful for especially such market times. जब हमने देखा मार्केट काफी volatile रहा है, so index में निफ्टी बैंक निफ्टी में barefoot spreads के थ्रू play कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल निफ्टी अराउंड अभी चल रहा है 22,900 का, और अगर आपका व्यू है कि 22,800 22,700 तक निफ्टी जा सकता है, तो आप barefoot spread इनिशिएट कर सकते हैं. लाइकवाइज बैंक निफ्टी में 49,000 के अराउंड चल रहा है, आपको लग रहा है यहाँ से 400 से 500 पॉइंट की मंदी हो सकती है, तो 49,000 का पुट बाय करके 48,500 का पुट सेल कर सकते हैं. तो सच वेज में इंडेक्स में आप ऑप्शन स्ट्रेटजी के थ्रू प्ले कर सकते हैं, एंड शॉर्ट सेलिंग में आप सेक्टर्स पकड़े जो वीक है और उसमें आपके जो एफए काउंटर्स है उसको आप प्ले आउट करें थ्रू इंट्राडे. दैट वुड बी आवर एडवाइस फ्रॉम आवर साइड. So guys, this will be the last query for today. Deepak Nitrate March future bought at 1900 whole or exit? Yes, so I think Deepak Nitrate also came with bad set of numbers, and if we see the reaction was brutal. Stock is down by almost 15%, and this has been the nature of the market. What is the future pricing, Avinash? Bought at 1900. Okay, so I think you have bought it. The client, the advisor, the viewers bought it at current level itself. Generally, such counters in weak trend. Setup wise, it's still weak. 2,000 will be the major hurdle zone for this counter. Some pullback may be seen because stock is already down, but setup wise it's weak. जब तक 2,000 के नीचे आएगा तब तक setup weak रहेगा. आपने अगर फ्यूचर ऑलरेडी बाय किया है, you can do two things. इधर आप एग्जिट कर सकते हैं या तो आप पुट हेज करने के लिए बाय कर सकते हैं. अब ओवरऑल स्टैंड would be negative till it holds below 2,000 levels. With this, I like to just sum it up few things. Today's weekly close. Bank Nifty till it holds below 49,500 levels. A bias would be negative for 48,500, 48,000. Nifty जब तक 23,200 के नीचे रहता है तब पोजिशनली हमारा सेटअप खराब रहेगा. इमीडिएट बेसिस पे 23,000 का 50 का हर्डल है. नीचे में 22,800 का सपोर्ट है, एंड फ्रेश वीकनेस विल बी सीन बियॉन्ड 20,800 levels. If we talk about the broader market we have seen carnage, and this carnage is still going on. So avoid bottom fishing for trading. For investment, try to add on quality companies on every fall. That will definitely help you to give some edge. So with that, I would like to close out this today's session, and hope we see some respite in the coming week. And thank you guys. That's all from our side. Wishing you all once again very happy Valentine's Day. Right now the portfolio is in red, but be patient. Definitely some sprite or some spring we'll see in coming months, and some recovery will be there. So that's all from our side. Thank you.
Thank you so much, Arpit sir, for sharing the insights and giving two delivery idea recommendations and one BTST as well. And apart from that, we have covered a couple of queries as well today. So yes, that's it, guys, from our end. And thank you so much for joining. Thank you so much, Arpit sir. Thank you.